चलिए आज का पहला वर्ड है डिफिडेंस. व्हाट डज द वर्ड डिफिडेंस मीन? डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड डिफिडेंस मीन? डिफिडेंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? टू हैव फेथ इन वन सेल्फ, इजंट इट? तो डिफिडेंस क्या होगा? लैक ऑफ फेथ इन वन सेल्फ, right? Confidence, to have faith in oneself. Diffidence is lack of faith in oneself. What is plagiarism? क्या होता है plagiarism? प्लेजियरिज्म इज कॉपीइंग अदर्स आइडिया और थॉट. कहते हैं जब इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं दे यूजुअली आर ब्लेम्ड ऑफ प्लेजियरिज्म. क्यों? हमारे यहाँ क्या होता है, डेफिनेशंस, स्टूडेंट्स आर सपोज टू क्रैम डेफिनेशंस and they fall prey to such definitions. तो प्लेजरिज्म क्या होता है? आप डेफिनेशन में लोगों को क्रेडिट देते नहीं जिसकी वो डेफिनेशन है. जिसने डिफाइन किया, आप इंडियन स्टूडेंट से पूछिए. डेमोक्रेसी क्या होती है? दे डोंट इवन नो. Who defined democracy as the government of people, for the people, by the people? But they will just name it and give that definition. So plagiarism हमारे यहाँ इंडिया जैसे मुल्क में एक आर्ट है और वेस्ट में इट इज क्राइम. दैट्स व्हाई दे गेट बेटर आइडियाज. राइट? प्लेजरिज्म हमारे जैसे मुल्कों में एक आर्ट है. नेक्स्ट इज it is about should your dinner be the smallest meal. It is not. Usually you should not eat heavy, right? And stop eating late at night. They say the maxim has been around for decades. Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Pauper is a poor person, right? So you should be careful with your food habits. अब फूड, डाइट और मील में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड, डाइट एंड मील? डिफरेंशिएट बिटवीन फूड, डाइट एंड मील. Food is what we eat. Diet is the amount of food eaten by a person at a time. That's why you have dietitians, not militian. Meal is more or less food eaten at a particular time. Right? What does underscore mean? Underscore, emphasis, and holistic.
Underscore is highlighting. Emphasis is put stress on something. And holistic is that refers to a complete or wholesome approach. Next is Manthan set for world premiere at LA's Academy Museum. Manthan is a 1973 movie. Amul's iconic feature film Manthan, directed by Sam Benegal and produced by 5 lakh dairy workers, farmers in Gujarat in 1976. So it itself is a world record. Manthan is produced by some 5 lakh dairy farmers. It is making its way to Los Angeles for a world premiere at the Academy Museum on Motion Picture as a part of Emotion in Color, a kaleidoscope of Indian cinema. The film will be screened on March 9th, just today, like a day after Women's Day. India's official Oscar entry in 1977. Manthan was born from cooperation crowd funded by Gujarat's dairy farmers who contributed ₹2 each. 2 रुपए दिए थे, 5 लाख, तो 10 लाख में उस समय ये फिल्म बन गई थी. Inspired by Dr. Varghese Kurian's Milk Revolution, it tells the story of small farmers uniting to build a cooperative that made India the world's largest milk producer. अमूल का फुल फॉर्म ही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. Right? The movement led to Amul, a lasting symbol of self-sufficiency, and India, the largest producer of milk in the world, with 2025 declared the International Year of Cooperatives by UN. The film's message is more relevant than ever. And it is basically, it was acted by Smita Patil, Nasiruddin Shah, and its song मारो गाम कथा पारे. बहुत फेमस ये सॉन्ग, बार बार it was shown as, it was more or less the anthem for dairy workers. Van Gogh, I hope you know Van Gogh, Vincent Van Gogh, right? Vincent Van Gogh, Salvador Dali, Picasso, Jatin Verma, Raja Ravi Verma, and that Muslim guy, I forgot his name. They all were the painters. Jatin Gujral also from India. आज के लिए इस पेपर में तो इतना ही है. अब मेन न्यूज़पेपर की ओर चलते हैं. What does legacy mean? What is legacy? क्या मतलब होता है लेगेसी का? Legacy is something that you have inherited. Hope the match is going on and India is probably winning this trophy, Champions Trophy, and I hope you know the man. He is now more relevant than ever. I don't care about others, but for you people, he is whole lot of words and ideas. And he can also help you remember the 16 Janpadas. Right?
So remember Virat Kohli. Centener, value of spinner Varun's 115 kilometer per hour arm ball. So that is his mystery ball. And he is cautious about it. Very is cautious. Again, Bayern Munich is there. Bayern waits 2-goal lead in Bochum defeat. So Bayern lost that match, but it's not the news for you. The news shall be Bayern Munich itself. Right? Muslim nations adopt Arab's alternative to Gaza Riviera. So they basically, OIC, Organization of Islamic Cooperation, at an emergency meeting in Saudi Arabia on Saturday, formally adopted a plan put forward by Arab League, the OIC, which represents the Muslim world. In a statement, urged the international community and international and regional funding institutions to swiftly provide the necessary support for plan. The Egyptian proposal, which does not outline a role for Hamas, which controls Gaza, has already been rejected by both US and Israel. Unlike the Trump plan, the Arab proposal aims to rebuild Gaza without displacing the territory's 2.4 million inhabitants who endured months of devastating, fragile ceasefire. Britain, France, Germany and Italy gave their backing in a joint statement by their foreign ministers, billing it as a realistic path for rebuilding war on Gaza without uprooting Palestinian inhabitants. The OIC adopts the plan on the early recovery and reconstruction of Gaza. But irony is, who will give them money? Which are those international organizations which shall come out and help them? Right? $24 billion penalty on China for COVID missteps. A federal judge in Mississippi, in a ruling Friday, found the Chinese government responsible for covering up the start of COVID-19 pandemic and hoarding protective equipments. He entered a judgment of over 24 billion that Missouri officials vowed to enforce by seizing Chinese assets. So this will again lead them to a direct conflict with China. And China, on the other hand, China hits Canada with tariffs in an indirect riposte to Trump. China ने मैक्सिको और कनाडा पर 100% टैरिफ लगा रखा है. It says, the news says, and repost is basically a clever reply to an insult or criticism. अभी जब अमेरिका ने टैरिफ चाइना पे लगाया है, चाइना ने क्या किया? चाइना ने कनाडा पे लगा दिया है. China announced tariffs up to 100% on canola, pork and other foods from Canada on Saturday, in a retaliation for Canada's decision in August to collect steep taxes on imports of Chinese electric vehicles, steel and aluminium. The Chinese tariffs, which take effect on March 30, were also a clear warning to Canada and indirectly to Mexico not to cooperate with United States on trade. The Trump administration, like the Biden administration before it, has been demanding that Canada and Mexico not serve as the backdoors for low-cost Chinese goods to enter the US market. True. From Canada and Mexico, it is the cheap Chinese good that enter the market. Now, I have always highlighted, why the cheap thing? Why not the best? But obviously, our identity is to produce cheap things, not the best things, I presume. Right?
हैकमैन, जीन हैकमैन, उसकी वाइफ, दे डाइड a few days ago, right? And his wife died of hantavirus, which spreads through the urine of rodents. Butterflies population is coming down by 22% in US, right? हम जो कल वुमेन डे था और आज न्यूज देखो ना, इंडियन आईटी कंसल्टेंट गेट्स 40 years jail for raping 5 in Australia and then they want to go to those countries. इनको तो लाइक गंजा करके वापस भेजना चाहिए, क्यों भेजें ऐसे गधों को. बांग्लादेश सीज troubling rise in cases of rape and assault on women. God knows, right? And Ramzan is going on. 2 days of revenge killings in Syria leave more than 600 people dead. And these are the Muslim countries. God bless them. Indigenous, आपको बताया था क्यूट पिक का क्लब. Why Canada is jailing more indigenous people? The original inhabitants, वैसे इन्होंने खत्म कर रखा है उनको. जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, इन यूरोपियंस के पहुंचने से पहले अमेरिका वाज अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन. दे किल देम एंड नाउ दे आर मेकिंग देम सफर, राइट? बट क्यूट पिक का क्लब भी तो होगा आकाश. क्यूट पिक के क्लब का क्या करेगा? Isn't it? वही तो सारी चीज है. बेनेवलेंट मैल बैन वाला क्लब है. अगेन सम 40 to 50 वर्ड्स. हेजमनी, आपको पता है हेजमनी होता है थ्रू शो सुपीरियरिटी ड्यू टू स्ट्रेंथ. तो बेनेवलेंट हेजमॉन, पहली बात तो बेनेवलेंट हेजमॉन, बेनेवलेंट हेजमनी अपने आप में क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन. Era over, but Trump may not quit IMF and World Bank. True, IMF और World Bank को नहीं छोड़ेगा. हेजमनी होती है जब आप अपनी पावर के बेसिस पर दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो. अमेरिका क्या करता था? यही तो करता था, isn't it? अभी तो ये बात चल रही है, वो नाटो से बाहर निकल रहा है, यूएन से बाहर निकल जाएगा, WTO से तो बाहर आ ही गया है, उसे WHO से भी, तो WHO को भी उसने टाटा बाय बाय बोल दिया है. इट लीव्स देम विद IMF वेयर द मनी इज, देयर इज ट्रम्प, राइट? नाउ इन अ मल्टीलिंगुअल इंडिया, व्हाई आर वी स्टक विद 3 language format straight jacket? True, and I agree with that. India is a multilingual country. Why 3 language format? And even if you are, make those North Indian kids learn South Indian languages as well. Why can't they learn South Indian language? Why South Indians only learn North Indian language? I fail to understand. आप नॉर्थ इंडिया में से किसी से भी तमिल के 4 वर्ड पूछ लो, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली में they cannot even differentiate. मैं भी नहीं कर सकता हूं, सच्ची बात बताऊं तो. Because we are not taught. And then we talk about India and suddenly NEP says 3 language format, right? Now rising transatlantic tensions can have dangerous consequences. True, transatlantic means both America and Europe, and they are the, they were the vanguard of social life. Suddenly, if they are in a tension, in a conflict kind of situation, the world will definitely suffer. Patriarchy, पेटर और मेटर का क्लब, पूरा नाउन का क्लब, 100+ वर्ड्स.
राइट। सोचो, कुंभ का प्रॉफिट विद पुण्य, संगम जल बिकम्स बिग बिजनेस। देयर इज दिस लेडी, मेलबर्न बेस्ड गायत्री रामेश्वरी took back Sangam water in 100 ml perfume bottles to get past immigration. Utkarsh Raj launched an online store selling water in January. He has since done 15 lakh sales to Indians and NRIs. So, that's how religion, works in India. आप रिलीजन के नाम पर कुछ भी बेच सकते हैं हमारे जैसे मुल्कों में। नाउ फ्रॉम चे गुवेरा टू हिंदुत्व। चे गुवेरा कौन था? हु वॉज चे गुवेरा? हाँ, डिजिटलिस्ट ना। मैं कहता रहा हूं, अभी एक आगे एक न्यूज बताऊंगा। इंडिया में सिर्फ ठगी सरवाइव कर सकती है और ठग सरवाइव कर सकते हैं। सोचो ना, ठगी का आलम क्या है। सरकार को, एजेंसीज को एग्जाम के 2 महीने पहले याद आता है कि मैथ्स कंपलसरी या मैंडेटरी करनी है, पहले ही बता देते बच्चों को। चे गुवेरा फीडस का क्लब है। चे गुवेरा, जिसने मोटरसाइकिलिस्ट डायरी देखी है उसको पता होगा। हाँ, क्यूबन एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, फिडेल कास्ट्रो का राइट हैंड मैन था। बहुत समय तक कहते थे ही वॉज द फेस ऑफ रिबेलियन। राइट। आज का इंक्विजिटिव है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ इट इज टिनामेन स्क्वायर, टिनामेन स्क्वायर कहां पर है? चाइना, बीजिंग, जाकर उसके बारे में पढ़ना। रेड स्क्वायर इन मॉस्को, विच स्क्वायर नेम्ड आफ्टर अ फेमस नेवल एनकाउंटर इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन लंडन। What is the name of that square? It is Trafalgar Square in London. Right. Second is, if you haven't traveled Gujarat of late, on which node will you find रानी का वाव? रानी का वाव पाटन की जो टाउन का जो फेमस मॉन्यूमेंट है, रानी का वाव, वो किस नोट पर है? किस डिनोमिनेशन पर रानी का वाव है? ₹100 के नोट पर होगा ना। Now, if you started from Alipuri for a journey of around 3550 steps or Siliveri for a 238 steps, where would you planning to visit? तिरुमाला मंदिर ना, तिरुपति। Who will Australia face in WTC? Who will Australia face in WTC World Test Championship final in June at Lord's? And June is, by the way, named after? नहीं, South Africa. Next question is, it is again 5th question, which is lateral epicondylitis is a condition that causes pain and inflammation of the tendons due to repetitive motion of the forearm muscles. What is its common name? एप्लिकॉन्डलाइटिस तो कोई नहीं बोल सकता, और ये मैंने आपको नहीं, जूनोज। हे, शी वॉज द वाइफ ऑफ रोमन गॉड जुपिटर, जूनो, द इटर्नल यूथ, isn't it?
एप्लिकॉन्डिलाइटिस होता है, किसी भी वर्ड के आगे ITIS आ जाए वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन. So this is inflammation of your tendons of forearms which is popularly known as tennis bone. क्योंकि टेनिस प्लेयर को अक्सर क्या होता है, टेनिस एल्बो बोलते हैं, टेनिस प्लेयर को फोर आर्म्स ज्यादा यूज करना पड़ता है ना. That's why that disease is commonly known as tennis elbow, but I'm not going to forget it now onwards. Reason being, yes, I have that location, ITIS. Now, if you started with Tadasana, then continued with Urdhva Hastasana, the Uttanasana, the Adhomukh Savasana, and then the Urdhav Mukh Savasana, and finally Chaturang Dandasana, and then reverse the sequence. What would you be attempting to do? योगा की फॉर्म है and which is known as Surya Namaskar. It is called the complete exercise. The name of which Indian city is the corruption of local term that literally means the town of boiled bean. Boiled bean का town कौन सा है? Which is also called the IT city or Silicon Valley of India. सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलुरु. Which Indian leader renamed some islands he visited during World War II as Shahid Dweep, Martyr Island and Swaraj Deep? और what is the new name of the place? उस जगह का नया नाम, उसकी कैपिटल का नया नाम क्या है? And after whom that particular town is named? कोलकाता का अनीश सरकार है. He is the youngest chess champion, 4 years. World's youngest FIDE rated player, सिर्फ 4 साल का. Look at this. He is with Magnus Carlsen. पता नहीं कब किस उसमें, सोचो मैंने मैग्नस कार्लसन से वर्ड्स आपको बताए थे और मैग्नस किंग्स के बारे में बताया था. दिस इज योर रिवीजन और एल्स देयर इज हेल लॉट ऑफ डेटा. करते रहिए, रट्टा मारते रहिए. अनीश सरकार FIDE का यंगेस्ट चेस प्लेयर है उसकी रैंकिंग में. वाव आपको पता है? वाव का मीनिंग पता है ना? व्हाट डज द वर्ड पर्ज मीन? पर्ज का मतलब क्या होता है? Half of Gujarat Congress working for BJP, says Rahul. Vows purge. And Rahul himself is working for BJP. What about that? Isn't it? तो क्या will he purge himself? True, but आकाश सोचो ना किस मूड में वो सारी चीजें बताई होंगी. मैग्नम ओपस, मैग्ना कार्टा. What is Magna Carta? And if you know Magna Carta, who signed the first Magna Carta in India and what was its implication? What was the outcome of that Magna Carta to the history of India? और मैं हमेशा कहता हूं जब जब मैग्नस कार्लसन आएगा इन एनी फॉर्म, इट विल हेल्प यू रिमेंबर. यही तो न्यूज़पेपर का फायदा है यार. ठीक है, हमारे यहां तो एज आई ऑलवेज बिलीव, हमारे यहां गोरों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम था जो गुलामों के लिए था, तो हम गुलामी बन के रह गए. मारना, डांटना, पीटना, धमकाना, डराना नहीं, जानवरों वाली चीजें. ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन अग्निवीर. अग्निवीर का फॉर्म निकला हुआ है, राइट? बोथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स.
सभी का निकला हुआ है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं वीडियो बनाकर बाद में डाल दूंगा। और सोचो ना यार, इंडियन गवर्नमेंट का आधे से 75% डिफेंस बजट का जाता है सैलरीज में और पेंशन में। हाउ कम यू एक्सपेक्ट इंडिया टू लीव फॉरवर्ड इन डिफेंस? चाइना का आपका बजट का 3 टाइम्स है, अमेरिका का 700 बिलियन है डिफेंस बजट। आई विल कीप ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पाकिस्तान ओनली। तो ठीक है, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी ही $300 बिलियन की है। अब वो 300 के उसमें भी उनका 60-70% तो इंटरेस्ट देने में चला जाता है। Ashwini Vaishnav says India's pragmatism will pay off amid global shifts. हमारी अप्रोच प्रैक्टिकल है। वी आर द ओनली कंट्री राइट विच हैज रिलेशन विद ऑलमोस्ट एवरी। सोचो कल वोंगी कह नहीं रहा था दैट बोथ elephant and dragon shall dance together. What if we dance together? Uncle Sam will definitely be worried. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कर रही है, बीईटी राइट। ऑनलाइन सबमिशन 28 फरवरी से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है। देन देयर इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। सोचो हमारे पास ओशन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारे पास सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम अभी अभी मोदी जी जाएंगे वहां पर मॉरिशस। मॉरिशस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज का एक कॉम्प्लेक्स ओपन कर रही है। पोर्ट लुई की जो मेट्रो है वो इंडिया ने बनाई है। 68% ऑफ द मॉरिशस पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। डेगो गार्सिया अगर उनको मिलता है, डेगो गार्सिया इंडियन ओशन में अमेरिका का बेस है, मालदीव से नीचे जाएंगे तो आपको डेगो गार्सिया दिख जाएगा। हाँ, पर्ज रिमूवल होता है उसका भी। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है जो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम मैनेजमेंट, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस। ये सब मास्टर्स के हैं। बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी इन नॉटिकल साइंस। Denied wheelchair women 82 falls at airport critical, airline refutes deny the charges. And she is not an ordinary woman, she is Raj Pasricha, women of decorated lieutenant general, had arrived in Delhi airport to board a flight to Bengaluru on March 4 when she was forced to walk with the support of family members due to non-availability of a wheelchair, but collapsed near the Air India counter. Her granddaughter Parul Kanwar shared in a post. She also alleged the airline staff refused to help her grandmother. This is what India is. MP will be the first state to have death for conversion. MP में एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहा है। इफ यू फाउंड कन्वर्टिंग पीपल right, there might be a death penalty. BNS आपको पता है, committed to women safety, BNS showing result. BNS is what? भारतीय न्याय संहिता। Now 24 women officers placed in various arms services of army, OTA के थ्रू बहुत सारी women they are included as officers in army.
अभी आपने पीछे एक ठगी का पढ़ा था, अभी एक खतरनाक चीज दिखाता हूं इसमें। खैर, now India has already cut tariffs for key nations like UAE and ऑस्ट्रेलिया, तो हमने पहले ही टैरिफ कट कर रखे हैं। ईडी सीजेस 14 करोड़ jet of fugitive key accused in 850 crore Ponzi scheme. And the enforcement director seized on Friday a Hawker 808 private aircraft registration N935H, allegedly owned by the Falcon Group CMD Amardeep Kumar, the fugitive prime accused in rupees 850 crore Ponzi scheme. And he basically, in Hyderabad in close areas, he offered people high returns. इंडिया में हाई रिटर्न, जो शेयर मार्केट हाई रिटर्न दे रहा था, अब वो हाई की जगह हाई हाई में रह गया है। अब सोचो कोई जेट से चल रहा हो तो बट ऑब्वियस सही है बंदा। The central agency, they say, investigating the Hyderabad-based Falcon Group Capital Protection Force Private Limited, Kumar and other key accused of allegedly running a Ponzi scheme under the pretense of invoice discounting investment opportunities. According to ED, Kumar is the beneficial owner of the aircraft, having personally signed the sale agreement in 2024. It was used for Kumar's personal travel and rented out for air ambulance services. The jet was purchased for 1.6 million, 14 करोड़। जब आप 850 करोड़ का घोटाला कर सकते हैं तो 14 रुपए खर्च करना कौन सी बड़ी चीज है। And these are despite having Saharas, Pearl Group, Kuber Group. So we have this potential of getting cheated again and again in almost every system. It is so rotten. हर बार कोई ना कोई आकर। Now, Barbie dolls made debut in American International Toy Fair आज के दिन 1959 में, and most young Americans, as per the news, they are deserting Christianity and religion. So they are not even following any other religion. योगी जी का कहना है मुगल्स कैन नेवर बी नेशनल हीरोज। कुड बी। एंड ही लेड फाउंडेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सुन के ही मुझे अजीब सा लगता है, इंडिया में R&D हमारे लिए बना नहीं है। वी डोंट बिलीव इन R&D, वी बिलीव इन प्लेजियरिज्म। हमारे मुल्क में कॉपी करना एक आर्ट है। इट इज नॉट अ क्राइम। एंड एज आई सेड, जो आपका आज का थंबनेल था, डू यू बैक ट्रैक ऑन मैथ्स क्राइटेरियन फॉर बीकॉम ऑनर्स? ठीक है, मैं मान सकता हूं आप पहले मैथ्स लेते थे, यू आर नॉट गेटिंग गुड स्टूडेंट्स, बट यू मस्ट हैव मेड अ प्रायर प्लानिंग। पहले से प्लान करना चाहिए ना। बढ़िया है, जीत गए। राइट, प्रायर प्लानिंग करनी चाहिए। आप 2 महीने पहले स्टूडेंट्स को बता रहे हो यू आर सपोज टू हैव मैथमेटिक्स इन 12th टू टेक अप बीकॉम ऑनर्स। मोस्ट ऑफ देम वर अलूफ। ये क्या हो गया? अब कहां से लाएंगे मैथ्स? वो तो 2 साल पहले का काम हो गया। गॉड नोज। अच्छा, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, यू कैन सी दैट। मैं उसका लिंक डाल भी दूंगा। सही है, हमारे पास टाइम ही तो बहुत है। हिंडन कहां पर है? रिवर। और यमुना का पार्क कल ही खुला था, यमुना वाटिका पार्क और हेरिटेज पार्क। इन ICU since 1993, यमुना still died in Delhi. Can it be revived in 3 years? पल्ला से शुरू होकर राइट जैतपुर तक
It is dead. It has hardly any life form. GST rates, they are saying it could come down. Your FM, Finance Minister. And then city women to get 2.5 monthly, CM announces. कब मिलेगा ये नहीं बताया, बस ये बता दिया मिलेंगे. When Indian laws don't sound Greek. Now the government of India is trying to make or convert those laws in simple English. एक standard clause, एक rent agreement का क्या होता है? I don't know whether a common man will ever be able to understand. The lessee shall pay to the lessor a lease fee for allowing them to use the said residential premises exclusively of 40,000 per month, and the above lease fee will be payable security by the lessee to the lessor. अब बंदा lessee और lessor आज तक जिंदगी में नहीं सुना होगा. Now they have changed it. The lessee will pay the lessor of rupees 4,000 per month as the rent. So still, who is the lessee, who is the lessor? Now for that even they have changed this income tax bill. They have simplified it so that common man shall be able to understand, or else it will remain a headache for a common man to understand simpler terms. Right? Now, a scholar who held ISI update Kulbhushan Jadhav. I hope you remember. कुलभूषण जाधव इंडिया का एक्स नेवी ऑफिसर था, इंजीनियर था. ही वॉज वर्किंग इन ईरान. नाउ सडनली समवन शॉट हिम डेड. राइट? मुफ्ती शाह मीर accused of helping Pakistan's ISI in kidnapping Indian businessman. Former Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav from Iran was shot dead. पता नहीं अननोन किलर कहां से आता है, काम करके चला जाता है. और I hope you remember the man Papa Pastor. Miracle healer caught in sex harassment row. वो याद होगा, आपने मीम्स देखे होंगे, खतरनाक वाले जिनको छू कर ही वो ठीक कर देता है जादू से. Now the man in quite like our own babas, जो दो चार अंदर हैं उनकी तरह. राइट? आज के लिए इतना ही. आई होप इंडिया मैच जीत गई है. गो एंड एंजॉय योरसेल्फ. राम राम. कल मिलते हैं.